सो हेलो एवरीवन, दिस वन इज द वीडियो नंबर 14 एंड आज इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं रिस्पांस क्यू पॉइजनिंग वी आर टू टी रिक्वेस्ट स्मगलिंग। सो अपने को रिक्वेस्ट स्मगलिंग वनरेबिलिटी ऑलरेडी अवेयर है अपन, इफ यू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, एंड उसमें हमने H2CL वाला किया था। अब इसमें ट्रांसफर इनकोडिंग वाला सॉल्व करेंगे। सो इसमें गिवन क्या है हमको, दिस लैब इज वनरेबल टू रिक्वेस्ट स्मगलिंग। सो बिकॉज द फ्रंट एंड सर्वर डाउनग्रेड कर रहा है HTTP जो वर्जन 2 को HTTP 1.1 रिक्वेस्ट में, एंड इवन इफ दे हैव एन एम्बिगुअस लेंथ। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली बताया। सो टू सॉल्व दिस लैब डिलीट करना है अपने को कार्लोस यूजर को, एंड यूजिंग रिस्पांस क्यू पॉइजनिंग टू ब्रेक इनटू द एडमिन पैनल। एडमिन का एक्सेस लेना है एंड एडमिन यूजर विद लॉग इन inappropriately every 15 seconds. Okay. The connection to the backend is reset in 10 request. So don't worry if you will get into a bad state. So ये बेसिकली बताया है कि अपने को ईच एंड एवरी 10 रिक्वेस्ट में उसका रिसेट हो रहा है, तो अपने को माइट भी इशू आ सकता है। सो वी विल गेट द फर्स्ट आइडिया ऑफ दिस दैट कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वो अपन सोल्व किस वे में करने वाले हैं। I have one diagrammatical way to show you. Like अपना जो फ्रंट एंड सर्वर क्या कर रहा है, जो HTTP 2 वर्जन को HTTP 1.1 में डाउनग्रेड करके भेज रहा है बैकएंड पे। सो फ्रंट एंड सर्वर ने तो उस रिक्वेस्ट को सिंगल रिक्वेस्ट कंसीडर किया, बट बैकएंड ने उसको टू डिफरेंट रिक्वेस्ट कंसीडर किया। एंड जो फ्रंट एंड का जो फर्स्ट रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो तो वो दे देता है, जो जो भेजा होता है उसने अटेकर को, एंड अटेकर ने बैकएंड को। एंड जो सेकंड वाला जो रहता है रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, वो उसको क्यू में रख लेता है। जो वेन एवर द विक्टिम जो यूजर रहेगा अपने को, उसको जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो यही जो अपना जो सेकंड वाले का जो रिस्पॉन्स उसको ऐड करके भेज देगा। सो आई हैव वन मोर डायग्राम टू शो यू, इट विल मच मोर इजियर देन व्हाट आई एम शोइंग यू। लाइक दिस वन इज लाइक कि अपना अटेकर ने टू रिक्वेस्ट को कंबाइन करके भेजा फ्रंट एंड को, एंड फ्रंट एंड ने बोथ रिक्वेस्ट को डिफरेंटली ट्रीट किया। एंड जो वट एवर द रिस्पॉन्स ऑफ द रिक्वेस्ट वन विल बी सेंड बैक टू द अटेकर। एंड जो रिक्वेस्ट 2 का रिस्पॉन्स था वो उसने क्यू में रख लिया। सो वेन एवर द लाइक एडमिन यूजर इंटरेक्ट विद द सर्वर, तो वो उसका जो रिस्पॉन्स 2 का जो क्यू में था वो उसको भेज देगा रिस्पॉन्स। एंड अपना अटेकर देन फोर्थ रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड देन इट विल गेट द रिस्पॉन्स ऑफ दैट एडमिन पेज, एंड वहां से अपन सेशन कुकी एंड और ले सकते हैं, एंड वी विल गेट अ एडमिन एक्सेस with the help of this. So first we will get the lab access and we will solve the lab. It will be get much more idea, and yeah. So now the lab is accessible to us. So I will copy that URL and paste the same URL into Burp browser. Yeah. And move to the Burp. Go to the proxy tab. Move to the HTTP history tab. Get that root wala request. Send back to the repeater and send this request to check that it will be working properly or not. Yeah, this will be working. So I will remove all, I will change that request method into post and remove all unwanted header from the request. रिक्वेस्ट में कर दिया, एंड आई विल लाइक अपना नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स को भी ले लेते हैं अपन। एंड वी विल डू वन थिंग, दैट जो कंटेंट लेंथ को ये ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है उसको ऑफ किया। एंड या आई थिंक एवरीथिंग इज गुड टू सी, लेट्स चेक एवरीथिंग इज वर्किंग। डाउनग्रेड अपने को करना नहीं है। ओके, so I will add a one to first we will confirm that कि अपना backend server transfer encoding का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So I think content length का अपने को रिक्वायर्ड रहेगा ही नहीं, whatever the content length we are sending to the server, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि backend transfer encoding का यूज कर रहा है। So I will add one more header, trans for encoding chunked value, and we will add some value over there। देख that अपन यहाँ पर कोई 3 बाइट का कुछ भी ऐड कर देते हैं, ए बी सी, चलो ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी एंटर, एंड वट एवर वी आर एंडिंग विद दैट जीरो से इसको एंड करा दिया। सो नाउ वी विल सेंड द रिक्वेस्ट, वी विल गेट 200 रिस्पॉन्स। सो बैकएंड सर्वर अपना चंक्ड इनकोडिंग पे डिपेंडेंट है, तो वट एवर वी आर एडिंग ओवर देयर, ये कंटेंट लेंथ कुछ भी रहे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इवन दैट वी विल रिमूव द कंटेंट लेंथ, दैट इट विल बी 200। अब ट्रांसफर इनकोडिंग का एरर क्या रहता है कि वो चेक करता है कि अगर जीरो से रिक्वेस्ट एंड होगा तो ही वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट को कंसिडर करेगा। सो मतलब वो एंड मानेगा। तो फर्स्ट वी विल रिमूव दैट वैल्यू एंड वी विल अपेंड एनी रैंडम वैल्यू ओवर दैट एंड सेंड दिस रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर टाइम आउट का या एरर आएगा अपने को, क्योंकि वो जीरो का वेट करेगा बैकएंड फॉर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। सो या जस्ट सी एंड वेट। चलो ये अपने को बैकएंड से एरर है, इट विल कंफर्म दैट बैकएंड इज यूजिंग ट्रांसफर इनकोडिंग। So we will prepare our attack request, remove that and give 0 over there, and we will do one thing. I will copy both value over there, and first I will add any random uh, attack request, and end करने के लिए अपने को two
क्या बोलते हैं अपन इसको, CRLF से अपन एंड करते हैं, सो दिस विल बी एंडेड विद दैट। सो क्या रहेगा अपना, क्यू में ऐड होगा। सो फर्स्ट आई एम सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट, सो आई विल गेट 200 रिस्पॉन्स, बिकॉज वो इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड जो इस वाले का जो रिस्पॉन्स होगा वो सर्वर पे ऐड हो जाएगा क्यू के अंदर। सो वेन एवर आई सेंड बैक द सेम रिक्वेस्ट, तो मेरे को क्या आएगा, 404 आएगा, क्योंकि ये रिसोर्स सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सो आई विल गो ओवर देयर एंड take one more into the repeater, and I will name this request as a take request, and this one is the normal request, request. Okay, so the take request I will send it to the server. So 200 response है, and I will send the normal request. So 200 है, okay. What's the issue? So say I take, I will change into get. Let's see. I think because of that, send this request, send the normal request. ओके सॉरी, आई हैव मिस वन थिंग दैट कि बैकएंड सर्वर तो अपना, फ्रंट एंड सर्वर तो पूरा भेज रहा है, बट बैकएंड सर्वर पे ये डाउनग्रेड हो रहा है 1.1 पे। वर्जन डाउनग्रेड करना था अपने को 1.1। देन सेंड दिस रिक्वेस्ट, देन सेंड द नॉर्मल रिक्वेस्ट अगेन। आ गया ना, नो नॉट फाउंड। सो ये अपने को हुआ, अपने को कंफर्म हुआ कि बैकएंड सर्वर इज यूजिंग ट्रांसफर कोडिंग, दिस इज वन मोर वे। एंड अब अपना अटैक को पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं अपने को अदर यूजर का टेक रिक्वेस्ट। अपने को अदर यूजर का सेशन चाहिए। सो वेन एवर द एडमिन या विक्टिम यूजर इज लॉग्ड इन इनटू द एप्लीकेशन, तो वो भी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड जो अपना क्यू वाला रिक्वेस्ट होगा वो तो उसको रिसीव हो जाएगा, एंड वट एवर द वैलिड सेशन आईडी विद द वैलिड रिस्पॉन्स वो अपने को रिसीव हो जाएगा। सो बेसिक आइडिया इज सिंपल। सो विल सेंड द अटैक रिक्वेस्ट, विल गेट 200 रिस्पॉन्स। आई विल जस्ट एड एडमिन ओवर देयर कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, मैच करेगा एडमिन का कुछ भी पेज का डेटा आएगा। तो 404 नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, not found, take request not found, not found, add आएगा, let's see, आना तो चाहिए। I will send my normal request, not found, not found, ये क्यू से रिस्पॉन्स आ रहा है अपने को, not found, not found, and okay, यहाँ पर भी लिख लेते हैं admin, admin का कुछ से आएगा कुछ भी रिस्पॉन्स ना। So let's send this request again. Okay, let's send the normal request. No, we will not receive. So we will do one thing, हम इसको intruder के through automate कर लेते हैं। So just send the same payload, take payload to the intruder, and do one thing, add a position anywhere and set null payload, and do one thing, continuous चलने देते हैं अपन indefinite, and resource pool में अपन मैक्सिमम रिक्वेस्ट एक ही भेजते हैं, डिले भी दे देते हैं रिक्वेस्ट में अराउंड 900 मिली सेकेंड्स। एंड यहाँ पर है अपन इसको कंटेंट लेंथ पर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करना है अपने को। सो अपडेट वाला रिमूव करना है अपने को, एंड गो टू द पेलोड, स्टार्ट दैट अटैक। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो बेसिकली अपने को क्या करने का है, यहाँ पर जाओ मैच एंड रिप्लेस पे। सो जस्ट एड द एडमिन नेम ओवर देयर एंड अप्लाई द सेम। So we will get a one request. Just observe that कि हमको यहाँ पर लोकेशन मिला है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर उसका आईडी है, एंड उसका सेशन भी अपने को आ गया है। So I will do one thing, just copy that session and control C back to that normal request वाला टैब। यहाँ पर अपन एडमिन का पेज ट्राई करते हैं, एडमिन पेज को एक्सेस करने का, एंड एडमिन पेज, चलो जस्ट कॉपी दैट, sorry, just paste and add that cookie value order and just send this request. So visible that कि हमारे को admin पेज पैनल एक्सेस है, क्योंकि उसका सेशन आईडी अपने को एक्सेस हो गया है, सिंपल सा। So we can observe that अपने को कौन सा डिलीट करना था यूजर, कार्लोस वाला। So just I will do Carlos, copy that endpoint, paste the same over there, send this request, 302 confirms that the user is not present no more. So move to the lab. Yeah, successfully. Congratulations. Thank you so much for watching my video.